तुम कितने समय तक या कितनी देर तक पढ़ोगे. ओके. हाउ लॉन्ग इज द चैप्टर. चैप्टर कितना लंबा या कितना बड़ा है. नेक्स्ट. नेक्स्ट प्लीज रीड. How often? कितनी बार? How often. So guys, often is an adverb which means बार. ठीक है. So how often means कितनी बार. For example, how often do you speak English at your home? I'm asking this. How often do you clean your room? कितनी बार in a day. Okay. So how often कितनी बार. How often do you study? How often do you learn English vocabulary? 0. Very good, Gaurav. Okay. So this is how long and how often. Any questions with these two slides? Pretty easy, right? So let's start with the quiz. First slide. आप कितनी बार सैर करने जाते हैं? Please choose the right English sentence. How long do you go for a walk? How much? How often? How many? Choose the right option. How long? How much? How often? How many? Aniket, please answer. How often do you go for a walk? Yes, how often? The third is the right option. How often do you go for a walk? आप कितनी बार सैर करने जाते हैं? यहाँ पे हम वॉक की जगह स्ट्रॉल भी कर सकते हैं. That we learned in the yesterday's evening session. How often do you go for a stroll? Right? Krishna, Preeti, Hindvi, Neha, Avi, and Sipra. You guys have given the incorrect response. How long we cannot say because long हम किसके साथ use करते हैं? Either with duration or with time. Next, how much? How much we use for money? Uncountable nouns. How much do you love me? How much money do you have? Right? How much sugar do you want in your tea? How many is we use with countable nouns? How many students are present in the class? Please don't forget this. Okay? It's a very easy topic. Perfect. Next slide. कटोरे में कितना दूध है? Choose the right option. How much milk is there in the bowl? How many milk? How often milk? How long milk? Yes. Good afternoon, Sachin. All right. Samya, please answer. How much milk is there in the bowl? Bowl. 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 The right pronunciation of this word is bowl, not bowl, not bowel, not any other word or pronunciation. Bowl. How Bowl. much milk is there in the bowl? कटोरे में हम कटोरा या कटोरी को बोल बोलते हैं. तो कटोरे में या कटोरी में कितना दूध है? Okay, how much milk? Now, much we use with uncountable nouns and milk is uncountable noun, right? Yes, ma'am. Great. Archana, don't forget in the bowl because we are talking about a particular bowl. Okay.
Weather is very pleasant at my place. Oh, lucky. Next slide. Dash does the movie last? How long? How hour? How many? Choose the right option. Gaurav, please answer. How long does the movie last? How long does the movie last? What is the meaning of this sentence? मूवी कितनी लंबी थी या कितने समय तक चली? ठीक है, मोस्टली वी हैव मूवीज ऑफ 2.5 आवर, राइट? 2.5 घंटे की मूवी होती है नॉर्मली, जो मूवी होती है. ज्यादा लंबी मूवीज होती है तो वो 3 घंटे की होती है. जैसे गंगूबाई काफी लंबी मूवी है, तो वो शायद 3 घंटे की मूवी है. सो बाकी मूवीज जो मैक्सिमम टाइम होता है मूवीज का वो 2.5 घंटे का होता है, बिकॉज हाफ एन आवर का आपका इंटरवल होता है, तो वो पूरा 3 घंटे हमारे कवर हो जाते हैं, राइट? ओके. Samprada, how often do you try this work? Your sentence is correct. Or how long this fan is on? Yes. Ma'am, can we say how long have you been there? Yes. For how long have you been there? Okay, next slide. तुम अपनी दादी से कितनी बार मिलते हो? Arrange the jumble words to form a proper sentence. It is raining today. Joshi, you are very lucky that you live in Uttarakhand. Weather must be pleasant in Uttarakhand. Harshika, please answer. Yes, ma'am. Good morning. How often do you meet your grandmother? How often do you meet your grandmother? और अगर आपको दादा दादी दोनों से के लिए पूछना है, so you can ask how often do you meet your grandparents? दादा दादी के लिए हम यूज करते हैं grandparents. So you can say I meet them twice a month or once a month, thrice a year, for example, right? Sometimes we live separate from our grandparents, so that time you can ask this question to your friend or anyone. How often do you meet your grandmother? How often do you called? Called is incorrect. Soumya, first of all, please understand we are using first form of verb because we are asking questions in the present. So often if you are using to kitni bar, you are using everyday life. So please do not use the second or the third form of verb. How often do you call, C-A-L-L, your sister? Next, dash does it take to get from Delhi to Mumbai? How long, how many, how often, how did? Choose the right option. Sachin lives. Tanisha, subject verb agreement. Sachin lives nearby my house, but we meet often. अगर वो आपके घर के पास रहता है तो आप ऑफन के साथ बट क्यों लगा रही हो? यहाँ पे होना चाहिए सो वी मीट ऑफन, हम ज्यादातर मिलते रहते हैं. अगर आपको यहाँ पे बट लगाना है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ना, बट वी डोंट मीट ऑफन और वी मीट रेयरली, वी मीट ओकेजनली. Okay, ma'am. Thank you. I never meet. जोशी, आई के साथ कभी भी वर्ब में एस नहीं आता.
I never meet my grandparents because they are no more. मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ. दीपक क्यों नहीं समझ में आ रहा, बताइए. आप प्रो लर्नर है ना, तो आप अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं. करिए माइक अनम्यूट और अपना सवाल पूछिए. आपको क्या समझ में नहीं आ रहा. इजी तो स्लाइड्स हैं आज के. अब आप बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा. हाउ लॉन्ग के साथ फॉर भी आएगा चौधरी. फॉर हाउ लॉन्ग डू यू लिव देयर, नहीं हैव यू बीन लिविंग देयर. ऑलराइट, लेट्स डिस्कस दिस. हिंदवी, How long does it take to get from Delhi to Mumbai? yes, so how long does it take to get from Delhi to Mumbai? दिल्ली से मुंबई पहुंचने में कितना समय लगता है. So how long does it take? How long does it take? Again, we are using does because we are talking about it. समय, it हम time के लिए use कर रहे हैं. And ma'am, we can say how long do you take time to solve this question? How long? How much time do you take to solve this How much question? time? वहां पे much आएगा. टाइम के साथ, मनी के साथ, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ much आएगा. How much time do you need to get ready? You take so much time, right? Yes, ma'am. Great. Naga Semi, thank you. How often do I come in my college? Khushu, how can you ask this question to yourself? अंजू और दीपक, आप लोगों ने क्लास टाइम पे ज्वाइन करी थी पहले, तो मुझे ये बताइए. क्योंकि जब हम लोग बीच में से क्लास ज्वाइन करते हैं और ऑलरेडी कुछ स्लाइड्स हो चुकी होती हैं, तब वहां पे आप लोगों को दिक्कत आती है समझने में दैट व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट मैम इज टीचिंग, व्हाट द टॉपिक इज गोइंग ऑन, राइट. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है हाउ वाले प्रश्न. हाउ से हम कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, पहले तो ये समझिए, ठीक है. उसके बाद हमने पहले पढ़ा है हाउ लॉन्ग. हम हाउ के साथ लॉन्ग लगाते हैं जब भी हमें किसी भी चीज की ड्यूरेशन पूछनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, कितनी देर तक, कितने समय तक, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग डू यू टेक क्लासेस, तुम कितनी देर तक क्लासेस लेते हो. फिर हमने पढ़ा हाउ ऑफन. ऑफन का मतलब होता है बार, तो यहाँ पे हमने हाउ लगा दिया. हाउ ऑफन, कितनी बार. फॉर एग्जाम्पल, तुम कितनी बार खाना खाते हो, तुम कितनी बार नहाते हो, कितनी बार पार्क में जाते हो, कितनी बार घर की सफाई करते हो. तो इन सब सवालों को हम हाउ ऑफन में रख के इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं. पहली स्लाइड में था आप कितना सैर करने जाते हो. यस रूपनाथ, हेलो. मैम, हाउ मेनी और हाउ ऑफ्टन का मतलब डिफरेंस क्या है? हाउ मेनी और हाउ ऑफन. हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, हाउ या कितने. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास. अब मैं इसके साथ हाउ ऑफन नहीं लगा सकती बिकॉज हाउ ऑफन का मतलब है कितनी बार. तो कितनी बार मैं किस में लगाऊंगी, वर्ब के साथ लगाऊंगी मैं. कितनी बार आप नहाते हैं, हाउ ऑफन डू यू बाथ. आई बाथ एवरी डे. समझ आया रूपनाथ? हाँ, समझ गया जी. तो हाउ मच और हाउ मेनी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं. हाउ ऑफन, ऑफन क्योंकि एडवर्ब है, हम इसको वर्ब के साथ लगाते हैं. हाउ ऑफन डू यू गो टू द जू. तुम जू कितनी बार जाते हो. आई गो द जू वंस इन अ मंथ. मैं महीने में एक बार जू जाता हूँ. हाउ ऑफन यू गो ऑन वेकेशंस विद योर फैमिली. Once a year I go on vacations with my family. आया समझ में? What is the difference?
Yes, तो ma'am. यहाँ पे क्वेश्चन है आप कितनी बार सैर करने जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है, वॉक वर्ब है, तो हम यहाँ पे हाउ ऑफन का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, कटोरे में कितना दूध है। तो अब यहाँ पे हम वर्ब की बात नहीं कर रहे, हम दूध की बात कर रहे हैं। दूध क्या है, नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे मच का यूज होगा। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द बोल। फिर हाउ डैश डज द मूवी लास्ट। यहाँ पे लगेगा हाउ लॉन्ग, मूवी कितनी लंबी चली, तो लंबी किसी समय के लिए हम लॉन्ग का यूज करते हैं। फिर तुम अपनी दादी से कितनी बार मिलते हो। तो मिलना क्या है, वर्ब है, मीट। हाउ ऑफन डू यू मीट योर ग्रैंड मदर। फिर डैश डज इट टेक टू गेट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली से मुंबई जाने में कितना समय लगता है। सो हाउ लॉन्ग। ओके, अब समझ में आ गया। आ गया मैम. परफेक्ट। Moving ahead. Someone please read. Ma'am, can I read? Yeah, Ananya. Go ahead. How many times? कितनी बार? एक बार, 11 बार, 4 बार? Question mark. How many times? ये पूछता है कि कोई काम या घटना कितनी बार हुई। भूतकाल का जवाब अक्सर एक एग्जैक्ट गिनती होती है। एग्जाम्पल, हाउ मैनी टाइम डिड यू विजिट पेरिस लास्ट ईयर। आंसर, 3 times. हाउ ऑफ्टन, कितनी बार। हर हफ्ते, महीने में, एक बार, हर रोज। हाउ ऑफ्टन, इससे ज्यादा जेनेरिक सवाल है ये। वर्तमान काल, भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल आदि सबके लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, For example, how often do you visit Paris? Answer, every month. यस अनन्या, ऑफ्टन नहीं होता, इसमें टी साइलेंट होता है, ऑफन। हाउ ऑफन। ओके, Okay, चलिए। ma'am. तो हमारा गाइस अब आ गया हाउ मेनी टाइम्स। व्हेनेवर यू वांट टू आस्क समवन अबाउट कोई काम वो कितनी बार करते हैं, तो आप हाउ मेनी टाइम्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक क्लासेस मैम। सो आई विल आंसर, आई टेक क्लासेस ट्वाइस एवरी डे। मैं 2 बार हर दिन क्लास लेती हूँ। सो दिस क्वेश्चन इज इन भूतकाल। व्हाट इज भूतकाल? Past, ma'am. Past. पास्ट। फ्यूचर मैम। Yes, ma'am. No, ma'am. Past, ma'am. Past. Past. Bhutkal is Past a past. tense. ये Future is भविष्यकाल. है कि भविष्य का। कोई काम या घटना कितनी बार हुई। अच्छा, ये पास्ट में पूछ रहे हैं हम, इसका जवाब अक्सर एक एग्जैक्ट गिनती होती है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू विजिट पेरिस लास्ट ईयर। सो गाइस, इफ वी आर आस्किंग अबाउट past, yes, so what we can use, how many times did, so we will use the second form of verb about past. If you want to ask question in present, then also you can use how many. For example, how many times do you take classes every day, so it's in present. How many times did you take the class yesterday, past. How many times will you take the class tomorrow, future. So guys, we can use how many in present, past as well as in future. Next, how often, कितनी बार। हर हफ्ते, महीने में एक बार, हर रोज। How often इससे ज्यादा जेनरिक सवाल है, ये वर्तमान और भविष्य सबके काम आता है। So you can use how often in present, past as well as in future. For example, how often do you visit Paris? So the answer will be in present, every month. Wow, I wish I could visit Paris every month. Yes.
Any Shagufta, you are raising your hand. Do you have any question? Today is my first class, ma'am. So hi, welcome to Hello English, Shagufta. How are you doing? Thank you. I'm fine, ma'am. Great. So this is your first class as a pro learner, or in Hello English this is your first class? My pro first class, ma'am. 1 minute. Hold your horses. Yes, Shagufta? First है ma'am मेरा pro में. Okay, so you have never used this app before? Use yes ma'am मैंने किया था पहले use. जी, तो आपने एज अ नॉन प्रो किया होगा ना यूज? Yes ma'am non pro किया था मैंने. ग्रेट ग्रेट. तो आपने प्रो मेंबरशिप ली है. वेरी वेल डन. प्रो Yes, मेंबरशिप ली आपने या सब्सक्राइब किया है? मैंने सब्सक्राइब किया तो नहीं समझ रहा. ओके ओके. शगुफ्ता, आपको समझ आ रहा है ना क्लास कैसे चल रही है, क्या टॉपिक चल रहा है, आपको क्या करना है? क्वेश्चन का आंसर देना है जो आप बोल रही हैं. आपको टॉपिक भी समझना है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, टॉपिक भी समझना है कि क्या टॉपिक चल रहा है, बिकॉज ये आपकी इंग्लिश को ही इम्प्रूव करेगा. राइट? Yes ma'am. परफेक्ट. हेलो मैम. हेलो दीपक. हाँ जी, बताइए. जी मैम, मेरा भी फर्स्ट क्लास है मैम. आपको भी बहुत बहुत वेलकम दीपक. तो दीपक, क्या समझ में नहीं आ रहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, कैसे क्या हो रहा है, कैसे सवाल पूछ रहे हैं सब. अच्छा, तो दीपक पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं. एक होते हैं प्रो लर्नर, जिन्होंने पैसे देके ये स्पीकिंग क्लास ज्वाइन की है, जैसे कि आप. जी तो ये जी. बाकी जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ये सब प्रो लर्नर्स हैं. आधे होते हैं जो दूसरे होते हैं नॉन प्रो लर्नर्स. वो कमेंट बॉक्स में, अगर आपके पास कमेंट बॉक्स शो रहा होगा, जी उसमें जी. वो अपना क्वेश्चन या आंसर लिखते हैं. मैं उसको रीड करती हूँ और उसको आंसर करती हूँ. ठीक है? तो आप Okay, लकी हैं, आप प्रो मेंबर हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आप सीधा अपना माइक अनम्यूट करिए और मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है? ओके उसके मैम. बाद बात करते हैं कंटेंट की. तो कंटेंट में हमारे पास स्लाइड्स होती हैं. ठीक है? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्लाइड होती है, जैसे आप ये वाली स्लाइड पढ़ रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ ऑफन हम कैसे यूज कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो होती है क्विज की. तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आपको सही आंसर देना होता है. ये आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए कि आपने जितना समझा है, क्या आप उसको सही से आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है? अगर आपकी गलती होती है तो भी कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला सही क्यों है, ये वाला सही क्यों नहीं है. तो इससे आपका ही फायदा होगा, आपको ही टॉपिक समझने में आसानी होगी. ओके मैम, थैंक यू. ग्रामर की सारी जो स्लाइड्स होती हैं वो ऐसे ही होती हैं. अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको क्लास टाइम से ज्वाइन करनी है. अगर आपने क्लास, जैसे मेरी क्लास 12 बजे शुरू होती है, मैं 12:05 पे क्लास स्टार्ट करती हूँ ताकि 5 मिनट में सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर ले. ठीक है? तो उसमें आपको क्लास ज्वाइन करनी है. अगर आपने 12:15 12:30 बजे क्लास ज्वाइन करी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि टॉपिक क्या चल रहा है ना? यस मैम. इसका आपको बहुत ध्यान देना है. और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक ही टॉपिक्स हैं. उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ जाता है टॉपिक्स का, लेकिन सब कुछ हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी. ओके मैम. परफेक्ट. तो अब आप इस चीज का ध्यान रखिएगा. Neha and Soumya, you both are raising your hands. Tell me. Ma'am, how can we ask the question in future tense by using often? Nice question. How often will you attend the classes? तो will लग जाएगा ना. फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रो मेंबरशिप खरीदी है और मैं आपसे पूछ रही हूँ नेहा, हाउ ऑफन विल यू बी एबल टू अटेंड माय सेशंस? आप कितनी बार मेरे सेशंस अटेंड कर पाओगी फ्यूचर में, और हाउ ऑफन विल यू अटेंड माय सेशंस करोगी. दिस इज हाउ यू कैन यूज विल. फ्यूचर में विल लग जाएगा. हाउ लॉन्ग विल यू टेक द सेशन? आई विल टेक द सेशन फॉर कंप्लीट 1 hour. ओके सौम्या, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Ma'am, how to increase our vocabulary? Because when I speak, then I don't I don't have any vocabulary. Then my mind is blank.
Okay. Soumya, this question's answer I will give at the end because it is not related to the topic. Okay. 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 So guys, let's move to the next slide. कल रात फोन कितनी बार बजा? Now we are asking about last night, which is past. Please arrange the jumble words to form a correct sentence. गौरव पिटाई होगी बहुत. मैं रात को अपने अपने भांजे और भतीजों को भी सुना रही थी रात के 2 बजे. सेम स्टोरी सुनाई मैंने जो हमने कल देखी थी. यस प्रताप, धीरे धीरे समझ में आएगा. एग्जैक्टली गाइस, तो कुछ टाइम दीजिए. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को टाइम लगेगा. हेलो मैम. सम टाइम. यस करणबीर. मैम, अगर ये बनाना हो कि कल एंड्रू साइमंड्स का एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था, तो इसको कैसे हाउ करके बनाएं? व्हाट टाइम आएगा यहाँ पे, हाउ नहीं आएगा, क्योंकि आप कितने बजे की बात कर रहे हैं. व्हाट टाइम did the accident take place? ठीक है. The accident happened. Okay. What time आएगा वहाँ पे? What time? How often तो कितनी बार हो गया ना, कितनी बार थोड़ी होगा accident. What time? All right. Next we have Karthik. Please answer. How many times did the phone ring last night? How many times did the phone ring last night? So guys, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कल रात फोन कितनी बार बजा था. How many times? Times कितनी बार did the phone ring बजा था last night, कल रात. Easy. Any questions from this slide? Okay. Tanisha, I have it right. But what do I do if you don't want to come? So आपका what I do नहीं होगा, what do I do? What do I do? Okay. Yes, who said excuse me, ma'am? Ananya? Ma'am, how many time and how often time they are different or not? पहली बात तो अनन्या, how often के साथ टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. और मैंने अभी क्या बताया कि हाउ ऑफन हम किसी काम के लिए यूज करते हैं. अब यहाँ पे हम फोन की बात कर रहे हैं कि फोन कितने बजे बजा था, तो नाउन है, उसके साथ हम टाइम्स लगाएंगे ना. हाउ मेनी टाइम्स डिड द फोन रिंग लास्ट नाइट. ओके मैम. व्हाट डू मींस एक वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब बोथ हो गई है. व्हाट डू आई डू. Yes, what do I do एक आपका helping verb है, एक main verb है. Thank you मैम. मैम दिस इज फर्स्ट टाइम मुझे समझ आया. मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ what I do. I do. हाँ, this is Thank wrong. you मैम. और आप यहाँ पे what should I do भी लिख सकते हो. मैं क्या करूँ, what should I do. Yes. Yeah. मैं क्या कर सकती हूँ, what should I do. तो ये हो गया एडवाइस के वे में कि आप जिसे पूछ रहे हो what should I do, right? What do I do, मैं क्या कर सकती हूँ भाई, तुम ही नहीं आ रहे. नेक्स्ट स्लाइड. तुम्हें यहाँ आने में कितनी देर लगी? हाउ ऑफन डिड इट टेक यू टू गेट हियर? हाउ लॉन्ग? हाउ मेनी टाइम्स? हाउ फार? चूज द राइट ऑप्शन केयरफुली. सौम्या, मिर्जा, तनीषा को बहुत जल्दी हो रही थी. अनन्या, जगन्नाथ, मेहुल. Ma'am, if we write ring in place of the phone, but how will you write ring without using the noun? Kya baja? Phone. Phone is important. Okay, next we have Krishna. Please answer. How long did you get here? Yes. How long did it take you to get here? Exactly. How long, kitni der lagi, did it take you to get here? The second is the right option.
Now how often तो guys हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे तो हम कितनी बार नहीं पूछ रहे कि तुम कितनी बार यहाँ पर आए हो, नो। फिर how many times नहीं यूज होगा, क्योंकि many is used with countable nouns, मैंने पहले भी बताया था। how far हम दूरी की बात नहीं कर रहे, right? So the second is the right option. How did this accident happen? Yes, how did this accident happen भी बिल्कुल ठीक है। There are different ways to ask one question. Na? Can we make this sentence without did? Which sentence, Shashikant? If you are talking about this, then no, because did is showing the past. Even in this sentence, did is showing the past. Did the phone ring and did it take? Both, in both, did is important. हेलो मैम। हेलो जी करणवीर, बताइए। मैम ये कैसे बनाएंगे, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, वक्त है ना, टाइम है, तो हाउ मेनी लगेगा उसके साथ। हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू दिस। ठीक है। Excuse me, ma'am. जी Ma'am, can we say, how do you know more about plants? बिल्कुल। शगुफ्ता, you are also raising your hand. जब आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो बोलने के लिए, तब आप अपना हैंड रेज करिए, ठीक है, बोलने के लिए, पूछने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। Dash is Agra from Delhi. How many times, how often, how far, how much? How long have you been studying in this app? Yes. It's B. Ananya, you are just act like is incorrect. You are just acting like a past military order. समझ ही नहीं आया आपने क्या लिखा है। वैसे एक्टिंग आएगा बिकॉज आप आर का यूज कर रहे हैं, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, प्रताप प्लीज आंसर। सचिन प्लीज ना। यस। How far is Agra from Delhi? फोर नहीं, फार, मुंह खोल के। How far? दूर, फार माने दूर। Yes ma'am. फार मीन्स दूर, तो आगरा दिल्ली से कितना दूर है? So guys, distance पूछ रहा है मैम, distance. जी, thank you. So guys, we are talking about the distance, so that's why we are using far. So far, we are supposed to use far whenever we talk about the distance. Okay? मैम यहाँ लॉन्ग क्यों नहीं आया? अरे भाई, लॉन्ग क्यों आएगा यहाँ पे? मतलब कि कितना लंबा? कितना लंबा तो मैं पूछते ही नहीं है, हम कितनी दूर पूछते हैं ना हिंदी में, कितना लंबा पूछते हैं कि दिल्ली आगरा से कितना लंबा है। करणवीर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं हिंदी भी नहीं पढ़ाऊंगी ना आपको यहाँ पे। ठीक है मैम। नहीं आपको हाउ फार, दूरी की अगर हम बात कर रहे हैं, हम हाउ फार का, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे पूछना है आपका घर स्कूल से कितनी दूर है, तो मैं यही तो पूछूंगी हाउ फार योर होम इज फ्रॉम द स्कूल। लंबा थोड़ी पूछूंगी। हाँ जी वो मैम थोड़ी मिस्टेक लगाने समय के साथ, कितना लंबा समय लगता है आगरा से दिल्ली पहुंचने में। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच आगरा फ्रॉम दिल्ली। ठीक है मैम। ये फार की स्पेलिंग क्या हो गए? FAR. ओके। How far it was from here when we were on call, can we say this one? Yes, definitely Adib, you can say, for example, you're talking to someone and you're saying how far it is, or yeah. Next, मुंबई में तुम्हारा प्रवास कितना लंबा था? Now we are talking about कितना लंबा। प्रवास क्या होता है guys? Stay, रहना। हाँ जी। Arrange the jumble words. Alpna, have you booked the session? और यहाँ पे did आएगा। Did you book the session before the session? मैंने आपको कल भी बोला था you are supposed to
टुडे नॉट टुडे आना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ, तो आपको कैसे ज्वाइन करने के लिए मिलेगा लिंक? मैंने आपको पहले ही बोला है, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उन्हें 10-15 मिनट पहले बुक करनी पड़ता है सेशन, तभी आपको लिंक मिलेगा। अब आपने एज अ नॉन प्रो ज्वाइन कर रखा है, तो आप इवनिंग वाले सेशन में ट्राई करिएगा। अलार्म लगा लीजिए फोन में, 10 मिनट पहले जो वो करनी है क्लास। नेक्स्ट प्रीति, प्लीज आंसर। How long was you stay in Mumbai? How long was your stay in Mumbai? आपने was you बोला था, your, तुम्हारा प्रवास या तुम्हारा स्टे मुंबई में कितना लंबा था? फॉर एग्जाम्पल गाइज, यू वेंट फॉर हॉलीडे, like for vacations with your family to Mumbai. So now you have come back and now I'm asking you कि आप मुंबई में कितने टाइम रुके या कितने टाइम ठहरे? So कितना लंबा रुके, कितना लंबा ठहरे? So this is how I'm gonna ask, how long? यहाँ पे भी हो सकता है did you stay in Mumbai or was your stay in Mumbai? Both are correct. Okay? Okay, ma'am. Perfect. How far is your home from school? Very good. Ma'am, did I can? Lean Khuziyad. अरे भैया पहले तो ये नाम अच्छे रखा करिए। Did I can learn बिल्कुल गलत सेंटेंस है। Without grammar, by practicing speaking, listening and reading. Ma'am, can I learn होना चाहिए, यहाँ पे did हटेगा। Yes, you can if you sit with people who speak English only. Then only you can learn English or speak English without learning grammar. Okay? How long do you take to eat lunch? Okay. Next slide. Dash, do you play cricket? How far? How often? How many? How high? How much do you eat when you are sad or happy? I don't eat much. How long time we meet? Khushu, your sentence is incorrect. Raj, please answer. Yes, ma'am. How often do you play cricket? How often do you play cricket? Now I am asking, आप cricket कितनी बार खेलते हैं? Yes. So you can answer, I often play cricket. Every day भी बोल सकते हैं आप. I don't often play cricket. मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलता. Because often is an adverb, so आप definitely इसको अपने आंसर में भी यूज कर सकते हैं. I don't play cricket often. I play cricket seldom. Seldom means कभी कभार, sometimes, rarely, बहुत कमी से. मैम समटाइम्स भी यूज कर सकते हैं सेल्डम की जगह? बिल्कुल, they both are synonyms. मैंने बोला ना, sometimes, seldom, कभी कभार. Ma'am, rarely. Rarely is बहुत कमी से. Yes, again they are synonyms. Rarely, seldom, sometimes, occasionally. They all are synonyms. They have the same meanings. कभी कभार. Hardly ever is बहुत कमी से. So hardly ever बहुत नीचे हो जाता है. Next slide. आपका भाई कितना लंबा है? So how long is your brother? How high is your brother? How much is your brother? How tall is your brother? Tanisha, क्यों इतने incorrect response देती हैं आप? I am feeling bad because here light has cut. Oh, his voice like Prabhas. His voice is like Prabhas. Is. Rupnath, please answer. How tall is your brother?
How tall is your brother? Now guys, हम किसी की ऊंचाई या लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं. इंसान की तो हम tall यूज करते हैं, और अगर हम बिल्डिंग्स के बारे में बात करें तब भी हम tall यूज कर सकते हैं. How tall is Burj Khalifa? और how long is Burj Khalifa? ठीक है, tall. कितना है वैसे? जी, बुर्ज खलीफा कितना लंबा है? मैं गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, बट हम गूगल से पूछ सकते हैं. हाउ टॉल इज बुर्ज खलीफा? खुद याद है. यस, बुर्ज खलीफा इज 828 मीटर. एंड हाउ मेनी फ्लोर्स इट हैज? कितने फ्लोर्स हैं बुर्ज खलीफा में? डेफिनेटली each column is 1.5 meters, 4 feet 11 inches. चलिए टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, बुर्ज खलीफा को छोड़ देते हैं. Next slide. Dash is Geeta's sister. How old? How many? How much? How long? यहाँ पे हम किसी की एज पूछ रहे हैं. Yes. How often do you eat at a fast food restaurant? Yes, good question. बाग बकरी is a game in उत्तराखंड, और हमारे यहाँ बाग बकरी चाय है. चाय का नाम है बाग बकरी चाय. हमेशा रिश्ते बनाए, है ना? ओके, साजल प्लीज आंसर. How old is Geeta's sister? How old is Geeta's sister? Harshika, you are raising your hand. बताइए आप. मैम ये often means अक्सर भी होता है ना? जी बिल्कुल, often means अक्सर भी होता है. थैंक यू. अक्सर का मतलब होता है ना ज्यादातर, तो हाँ अक्सर वही है. हिंदी में हम अलग अलग अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं. अक्सर, बार. मैम अक्सर के लिए मोस्टली भी यूज किया जाता है ना? जी बिल्कुल किया जाता है. ठीक है, क्योंकि उसका मतलब है ना ज्यादातर. अब उर्दू में हम तो ज्यादातर बोलते हैं, मोस्टली. आप लोग शायद अक्सर यूज करते हैं, मुझे नहीं पता ये हिंदी का वर्ड है या उर्दू का. मैम प्लीज चेक आवर आंसर्स आल्सो इन कमेंट बॉक्स. शेख शाजिया, आई डू दैट, डोंट वरी. हाउ ओल्ड इज गीता's सिस्टर? नाउ हम एज पूछ रहे हैं. गीता की सिस्टर कितनी बड़ी है? ठीक है, मतलब उसकी उम्र क्या है. नाउ दिस इज अ वेरी गुड, क्या कहते हैं, टेबल. गाइस प्लीज रीड फटाफट. How long? कितनी देर. How often? कितनी बार. How many times? कितनी बार. How far? कितनी दूर. How high? कितना ऊंचा. How tall? कितना लंबा. How much? कितना. How many? कितने. How wide? कितना चौड़ा. How deep? कितना गहरा. How old? कितना बड़ा. कितने साल का. Yes, so guys, now यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं हाउ के साथ. तो यहाँ अब आपको सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जानी चाहिए. तो हाउ लॉन्ग हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? कितनी देर. कोई काम कितनी देर तक चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी कितनी देर तक चल रही है. कोई काम जैसे घर में आपके पेंट हो रहा है तो वो कितनी टाइम तक चल रहा है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद आता है हाउ ऑफन, कितनी बार. कोई काम कितनी बार हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ? आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ऑफर योर प्रेयर्स? आई प्रे 5 times in a day, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, फिर आ गया हाउ फार, कितनी दूर. ये हम डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं. हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द स्कूल. हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम माई हाउस, कुछ भी हो सकता है ना. हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम मुंबई.
नेक्स्ट, हाउ हाई, कितना ऊंचा, तो हम हाई किसके लिए यूज कर सकते हैं, माउंट एवरेस्ट. टॉल भी यूज कर सकते हैं, कितना लंबा, हाउ टॉल इज माउंट एवरेस्ट, और हाई इज माउंट एवरेस्ट. ठीक है. हाउ मच, कितना, हाउ मच वी यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स. प्लीज रीड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. हाउ मच मिल्क डू यू take in your tea, how much sugar do you take in your tea. How many, we use with countable nouns. How many children do you have? I have, for example, 5 children, 2 children, 3 children. How wide, kitna chauda. How wide is your laptop? How wide is your room? How deep, gehra, how deep is this lake? How old, ओल्ड हम किसी बड़े के लिए भी यूज कर सकते हैं, किस साल में. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था हाउ ओल्ड इज गीता सिस्टर, और हम ओल्ड पुराने के लिए भी यूज कर सकते हैं. हाउ ओल्ड इज योर लैपटॉप? माय लैपटॉप इज न्यू, आई बॉट इट रिसेंटली. ओके, समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन इसमें से? इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड्स और अनम्यूट योरसेल्फ टू आस्क. कमेंट में. उम्र दराज, मैम प्लीज चेक, मैंने पढ़ लिया था, थैंक यू सो मच. हाउ ओल्ड इज गीता सिस्टर? मैम इट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज गीता सिस्टर? यस फिरोज, इट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर आस्किंग टू समवन एल्स. हाउ हाई इज योर ब्रदर? हाउ हाई इज रॉन्ग जोशी. मनीष, हाउ टॉल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. I take a screenshot. I took a screenshot. Mehul, how long it will take us to reach there? Very good, Adeep. How long will I wait for Munni's apostrophe S evening class? 4 more hours. How long? कितनी बार और कितना दूर? How long ना ही कितनी बार है ना ही कितना दूर है. How long का मतलब है कितनी देर. How many times you used your phone today? अभी तक तो एक भी बार नहीं. How old is this furniture in your home? How high is her heels? Nice, Mehak. सुहाना, how often and how many समझ नहीं आया. भाई how often और how many दोनों इतने different हैं, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? How high is the Mount Everest? Very good. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं जल्दी से. Dash, have you been working here? साजिल ने आंसर कर दिया था दोनों. शगुफ्ता प्लीज आंसर. शशिकांत, How long have you been working here? Very good. Thank you, Shagufta. How long have you been working here? आप कितने समय से इस कंपनी में काम कर रहे हैं? So how long have you been working here? No how many, no how tall, no how much time. Okay? For how long भी बोल सकते हैं, सिर्फ how long भी बोल सकते हैं. सुहाना, मैं आपको फिर से बता देती हूँ. हाउ ऑफन कितनी बार होता है, हाउ मैनी कितना होता है. हाउ ऑफन हम वर्ब के साथ यूज करते हैं, हाउ मैनी हम नाउन के साथ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. डैश चांदनी चौक फ्रॉम योर प्लेस. हाउ फार इज, हाउ मच फार इज, हाउ मैनी फार इज. Dipti, how old you is incorrect. How old are you? सब्जेक्ट कहाँ है, मतलब सब्जेक्ट तो है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, आर कहाँ है. तनीषा. Yes, ma'am. Wait. How far is Chandni Chowk from your place? Chandni Chowk is quite near to my place.
Yes, ma'am. Really. Really, ma'am? हाँ, बहुत पास है चांदनी चौक मेरे घर से. Okay, I went. So Soumya, you also live in Delhi, na? No, ma'am, I don't live, but I go. I go many times. Oh, great. Tanisha, what about you? Ma'am, it's take It by takes. metro. It takes half an hour. Half an Oh. means of 45 an hour by metro. अच्छा, बाय मेट्रो. नहीं तो यहाँ से रिक्शा चला जाता है. 15 मिनट में आई कैन रीच. वो बात अलग है कि ट्रैफिक इतना होता है कि 15 मिनट के आधा घंटा लग जाता है. लेकिन इट्स वेरी नियर. मतलब आई लाइक टू शॉप फ्रॉम कृष्णा मार्केट. आई रियली लाइक कृष्णा मार्केट. वहाँ के सूट बहुत अमेजिंग होते हैं. सो यस, कृष्णा मार्केट चांदनी चौक के बिल्कुल सामने. अब तो काफी अच्छा बना दिया ना सारा अंदर से. Yes, ma'am. There is a Prantha Wali Gali. Have you visited there? No, never. I do not like to eat anything in Chandni Chowk, but Jama Masjid is somewhere I prefer eating. Okay. Yeah. Okay, so guys, how far? Now we are talking about distance. How far Chandni Chowk is bhi lagega. So how far is Chandni Chowk from your place? Perfect. And that was the end. Like the last slide, Sajal on top with Karthik also. Then we have Harshika, Taroob, Preeti. Very well done, guys. Now जल्दी से मैं ये रीड करूं. आज बहुत ही गलत हुआ है मेरे साथ. Mehul, what happened? How can he reduce stress in his life? Very good, Suhana. How have you been studying? How नहीं पूजा, how long? जब तक आप लॉन्ग नहीं लगाओगे आपका सेंटेंस ही नहीं बनेगा ना. आप कितने टाइम से पढ़ रहे हो, कितनी देर से पढ़ रहे हो. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग हियर. अच्छा, स्टेइंग है. हाँ, तो आप कितने समय से रह रहे हो. हाउ फार is Vidya is how far is Chandni Chowk? How deep is the Titanic? Hello, ma'am. Titanic is not water, so we cannot say deep. Acha, how deep Titanic is in the water, we can say like that. Yes. हेलो मैम. जी करणवीर, बताइए. मैम जैसे कि जहाँ पर समय आता है मोस्टली भी समय कितने समय से ये हो रहा है, वहां पर हम हाउ लॉन्ग ही यूज करेंगे ना ज्यादातर. जी बिल्कुल. जैसे मैं आपसे पूछूं आप कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. आप अभी कितने तो समय मैम से 2-3 हफ्ते हुए हैं. हाँ, आप कितने समय से जिम कर रहे हैं. सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग टू द जिम. ठीक है. ठीक है मैम. राइट. मैम जी हर्षिका. मैम मेरा कल भी क्वेश्चन था पर रह गया वो. वर और डिड में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. जहाँ पे वर और डिड जब पास्ट टेंस बनाते हैं ना. आपका फर नहीं समझ में आ रहा. फर क्या बोल रहे हो? करो. was were. अच्छा, was were और did बहुत इजी है हर्षिका. was were we use with ing as past continuous and did we use as past simple. Okay. How did you reach there? तुम कहाँ कैसे पहुंची थी? मैम बट कल एक सेंटेंस था मैंने लिखा भी था, आपसे पूछ लेती हूँ. बताइए. हम क्वेश्चन मार्क कर रहे, मतलब वो प्रश्न वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो उसमें था. एक मिनट. Good afternoon, everyone. Am I audible? Please put it on the chat because there is no one on the. Right now, nobody has joined me there on Zoom. Welcome there, Dinesh, Mirza, Ramya. Pleased to meet you. Okay.
Ramya, Deepak, No Name, Mirza, Shayani, Dinesh, Saurabh Jaha, Babu. This is Ramya, Priya, Amit Singh, Fatima. Fatima, you haven't joined me yet, beta. I cannot see you with me. Please join Fatima. Rak, Devang Kumar, Maruti Nayak, Palak, Jayashri, Saurabh Jha, Meet Kumar, Adil, Lovepreet Singh, Indra, Danish Sheikh, Saurabh Jha. This is Karan Dillon, Nishant Chauhan, Dipender, Sujata, Rizwan, Navjot Singh, CUP, Jyoti. Thank you so much, sir. Jyoti sending me Jaya Mol and Jyoti. Thank you for sending me yes and yes, ma'am. Hello. Shravan, hello. How are you doing? Yes, Lovepreet. Very good afternoon, Naga. Thank you so much for joining here. This is Veena, who is just signing from Hello English. I will be taking your session for this particular hour. I'm available on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Timings are 1 to 2. Today we are back again with a session which we really feel is very important for all of us to practice, and that is supposed to be the speaking activity. We are again back with the speaking. That means you have to comprehend, you have to learn how to pronounce it, and at the same time it is important for you to learn the pronunciation, not the vocabulary. For a simple word there is an enhance and a build up. Rather, I'd say it is of a little higher level that we are introducing to you all. So we are back again with this particular kind of session. Krishna Reddy and Neelam Tyagi, thank you so much for joining. Neelam, बहुत दिनों में आई हो आप. I hope everything is fine. Okay, Rajesh is also joining, and Tarla Rajesh Shah is also joining. आप में से कोई भी, anybody is interested in joining me on the Zoom, I have just shared with you a pro invite. That's an invitation which will permit you to fill up few details, few forms. Of course, you are paying extra for that, but आप अगर चाहते हैं किसी भी टीचर के साथ में 1-to-1 जुड़ना, मतलब आप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो आपको उन टीचर का नाम और उनका कोड डालना पड़ेगा. मेरे साथ अगर जुड़ना है तो मेरा नाम है VEENA और मेरा कोड है 1010. ऐसे ही जो भी टीचर के साथ आप जुड़े, उनका नाम और उनका कोड ले लीजिए, जिसके भी आप कंफर्टेबल महसूस करें. जहां तक मेरी बात है ना, मैं आपके साथ में बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर पे काम कर रही हूँ. अगर आपको कुछ एडवांस चाहिए तो प्लीज गो एंड लुक फॉर सम अदर टीचर. Rajesh and Tarla Rajesh Shah, thank you so much for joining. Thanks a lot. Let's get started. Today we are back again with the pronunciation, comprehending and a vocabulary structure. That means you're going to hear somebody, आपको उसको comprehend करना है, आपको क्या सुनाई दिया वो लिखना है. कुछ sections ऐसे होंगे जिसमें कुछ अलग-अलग phrases होंगे, आपको उनको join करके proper sentence में बनाना है. So ये थोड़ा सा एक ऐसा section है where we feel that if you are actually working with people who are native speakers, and if you have to speak to them or you have to sit with them and talk to them, क्योंकि आजकल क्या है, because of this online process or work from home, even if you are sitting even if the office is in US and you are sitting in Andhra Pradesh, your conversation is going to be with those people who are actually might be the bosses are from US, might be. So whatever they are trying to say, you are not able to understand. इसलिए हमें बेहतर लगा कि यही वो टाइम है कि इस चीज को भी हम इंट्रोड्यूस कराएं. Let's go ahead and start the session there. Let's start. You need to type and tell me what you can hear. He's a stickler for accuracy. He's a stickler for accuracy. See, Jyoti, Saurabh, Shravan, Lovepreet and Joy, जल्दी मत करो. एक बार सुनो, 2-3 बार सुन लो, फिर टाइप करो. He's a stickler for accuracy. क्या सुनाई दिया? He's a stickler for accuracy.
जिससे तो सिक्योर एक्यूरेस ऐसा कुछ। कुछ कुछ तो समझ आया है ना? हम्म। Some words you are able to understand. All right. एक बार और मैम आपका लिंक शुरू करते हैं ना, उसके पहले आवाज आपकी बहुत अच्छी रहती है, जब लिंक में आ जाती है तो आवाज कम हो जाती है, ऐसा क्यों? मतलब लिंक जब ज्वाइन कर Stickler for accuracy. I'm so sorry. क्या कह रहे हैं तरला, दोबारा बोलिए प्लीज। आपका जब मैं शुरू करती हूँ इंग्लिश का जो ऐप है हेलो इंग्लिश का, उसमें जाती हूँ ना, आपका शुरू होने से पहले जो लिंक ऊपर आता है ज्वाइन करते हैं, उसके पहले आपके वहां पे आवाज इतनी लाउड और अच्छी है, यहाँ पे कम हो जाती है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगली क्लास थी ना जिनकी, उनकी आवाज बरोबर आ रही है। अच्छा, और यहाँ मेरी आवाज में दिक्कत है? हाँ, लिंक ज्वाइन करते हैं ना उसके बाद दिक्कत है, पहले ऐसे ही नॉर्मली आप स्टार्ट करोगे ना तो आवाज बरोबर। तरला अब आवाज कैसी है? चेंज आया आवाज में? नहीं वैसी है। अच्छा, मैंने पंखा चला रखा था, उसको बंद किया है, कई बार उसकी भी आवाज से ना सुनाई नहीं देता है सामने। हाँ फिर भी बेटर है, पहले से बेटर है। बेटर है, ठीक है, मैंने उसको बंद कर दिया है। आई विल बी फाइन विद यू। फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलिए हम जो बात कर रहे हैं तो उसमें बात करते हैं। एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहे हैं, ही इज, एक बार यही बोले He's तो, a stickler for accuracy. he is a stickler for accuracy. He is a stickler for accuracy. So what he, H-E, is, I-S, stickler, S-T-I-C-K-L-E-R, stickler. It's a noun basically. Stickler for accuracy. A-C-C-U-R-A-C-Y. ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कल ये कहा गया था कि अभी भी आप लोगों के सामने सेंटेंसेस नहीं आते हैं। अब हमें समझना क्या है ये सेंटेंस को, बेसिकली स्टिकलर फॉर एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जो वर्ड उन्होंने बोला है, जो सेंटेंस। मैम एक्यूरेसी का स्पेलिंग वापस बोलेंगे? एक्यूरेसी, A-C-C-U-R-A-C-Y, एक्यूरेसी मतलब क्या है कि एक जो इंसान है ना, उसको एक पर्टिकुलर चीज या एक पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर, उसका जो खुद का, हाँ ये किसने चलाया अभी? आई कुड हियर फ्रॉम समबडी एल्स साउंड। अनन्या, कश्यप, डिड यू यूज इट? यस मैम। तो अब आप स्पीकर पे सुनाई दिया ना आपको? यस मैम। तो दैट मीन्स आप सब चेक करिए एक बार, आपके भी आ रहा होगा। क्या करना है मैम? वो जो स्पीकर का फेस बना हुआ है ना, स्पीकर बना होगा ना आपके पास में, उसको टैप करिए, देखिए आवाज आनी चाहिए एकदम क्लियरली। हम उसी पे तो काम कर रहे हैं। आप लोग बोले आती नहीं है, चेक करो। और फिर आपके पास अनन्या कोई सेंटेंस आया सामने? नो मैम। अच्छा, आवाज आ गई। यस मैम। ओके, सो एक इंसान एक सेकेंड फातिमा, एक मिनट बेटा। जो एक इंसान, एनी ह्यूमन बीइंग, जिसको एक होता है ना, कई लोगों को एक इस तरह की सोच होती है कि काम जो है वो इस लेवल का होना चाहिए या किसी का बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए, तो उसके लिए एक इंसान इस तरह का ही होता है। कई बार लोगों का खुद का नेचर या बिहेवियर ही ऐसा होता है कि उनको हर चीज एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट चाहिए होती है। सो स्टिकलर नाउन है बेसिकली, स्टिकलर फॉर एक्यूरेसी, हर चीज एकदम प्रिम एंड प्रॉपर और परफेक्ट चाहिए। यस फातिमा, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? कब somebody wanted to say something na? Don't unmute until unless I tell you. Fatima, you wanted to say something beta? नो मैम। No, अभी किसने बोला था ना? अनन्या, आप जो बोल रहे हो स्पीकर का। मैम आई हैव सेड। ओके, हाँ तरला बोलिए। स्पीकर का मुझे तो कोई आइकॉन नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो अपना जो हम बोलते हैं अनम्यूट करते हैं वो, फिर वीडियो का, फिर वो हैंड है, कमेंट्स है, नीचे जो है एरो दिखाया हुआ है।
अनन्या, आपने कहाँ पे काम में लिया, जरा मदद कर दीजिए जल्दी से तरला की, मुझे क्लास आगे ले जानी है। ओके। What नाम? अच्छा, मेरी आवाज बार बार क्रैश हो रही है, दैट मीन्स इट्स एन इंटरनेट। एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू इसका मतलब क्या है। एक बार जस्ट हियर द प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा सा टिपिकल है इसका। देखिए हर बार मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है, तो मुझे भी BRUSQUE ये वर्ड है, BRUSQUE। अब इसका प्रोनाउंसिएशन जरा संभाल के बोलिएगा, अगर आपने ये प्रोनाउंसिएशन बोला तो गलत होगा। No, this is not the pronunciation. इसका pronunciation है BRUSQUE का। वेरी गुड कृष्णा रेड्डी, अनन्या कश्यप, क्योंकि इसमें जो टाइप करो वही आ जाए। ब्रास्क, ब्रास्क, BRUS को ही बोलना है, ब्रास्क। QUE का प्रोनाउंसिएशन आपको वहां पे नहीं लगाना। आइए आपके, आर यू एबल टू गेट इट व्हाट वी आर सेइंग? ब्रास्क, ब्रास्क, ब्रास्क इज बेसिकली एक ये ना एक एडजेक्टिव की जैसे काम में आता है। जब हम कहते हैं ना वो बहुत ही ब्लंट है या बहुत शार्प है, या हम ये कह सकते हैं कि somebody who is very abrupt, मतलब से कहते हैं ना एक इंसान कुछ कहना चाह रहा है और वो कोई उसको परत दर परत छुपा के अपनी बात को धीरे से पेश करना चाहता है, और एक है जो बिल्कुल ब्लंटली आके आपको बोल देगा। There we call it as brusque, brusque. I'll just repeat it again. Please check this part once, all of you. Just a second, please. Refreshing it. Brusque, brusque, brusque. Somebody who is abrupt, blunt, sharp. All this falls in the category of brusque. अगर आप चाहते हैं तो चलो ठीक है, but that's okay. Let's go to the next. But I'm really happy कि तुक्का मारना भी तो चलो आप लोग इसमें सीख गए हैं। कृष्णा, अनन्या, this is I don't know, Shagun, okay? ADP, Lovepreet and Palak have given us the right answer. Now these are the phrases you need to place it. Hello Sandeep, thank you for that high message. To Europe. Regular Johns. Per. To Europe. Regular Johns. Per. ये अलग अलग phrases हैं, इनको पहले सुनो, फिर उसके बाद इनको प्लेस करके एक सेंसिबल सेंटेंस में बनाओ। To Europe. Regular Johns. Per. To Europe. Regular Johns. Per. Anybody could pick up something from here? To Europe. Regular Johns. Per. कृष्णा रेड्डी, कोई वर्ड सुनाई दे रहा है? When give her chance. Give her chance, okay? Yes. There is regular chance. Okay. देखिए आंसर क्या है? Her regular jaunts to Europe. HER, her, regular, REGULAR. अब ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए, jaunts, JAUNTS, to Europe. To Europe. Ma'am, John's Regular Johns. Per. थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, इतनी जल्दी नहीं करो, धीरे धीरे चलेंगे। जॉन्स की स्पेलिंग है JAUNTS, जॉन्स। रेगुलर
मतलब आपकी एक लगातार होने वाली जर्नी। छोटे छोटे जो एक्सकर्शंस होते हैं ना, छोटी छोटी जो ट्रिप्स होती हैं, जैसे सुबह निकले, फिर कहीं पे रुक गए आप, फिर थोड़े से दूर चले, फिर रुक गए, मतलब एक साथ लॉन्ग एक्सकर्शन पे नहीं जाते, प्लेजर ट्रिप्स होती है ना, उनको हम कहते हैं जॉन्ट्स। अब ये आपने सॉरी एक इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे को मैंने दोबारा भी ज्वाइन किया, आ नहीं रहा है जैसे रेगुलर अभी रोज आता है, आज कुछ भी आ नहीं रहा है वहां पे। तो फिर आपको अपने वाले हुआ है, रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करूं? हाँ, रिफ्रेश करो, और नहीं फिर भी दिक्कत आए तो PREMIUM premium@hello english पे अपना ईमेल डाल दीजिए। ओके, ठीक है, ओके। हर रेगुलर जॉन्स टू यूरोप। एक बार ये बहुत आजकल ये इसके नाम से तो लोग अपने To Europe. Regular Johns. जॉन्स, हाँ, जॉन्स जो है वो आजकल लोग इसके नाम से ना अपने रेस्टोरेंट्स भी खोलने लगे। जॉन्स, JAUNTS। तो आप जब छोटी छोटी ट्रिप्स पे जाते हो, प्लेजर ट्रिप्स के लिए जाते हो, उसको हम कहते हैं जॉन्स, JAUNTS, जॉन्स। अजमोल, वेरी गुड। Listen to the question and answer the simple answer. Give a simple answer. What is the currency of the USA? I am again going to repeat this for you. Refresh कर रही हूँ. So just stay with me there. Okay. What is the currency of the USA? Easy to understand. यूएस की करेंसी क्या है? हाँ, so What is the currency of the USA? don't shift to Hindi. You don't need to shift to Hindi. हाँ, yes. The answer is dollar, which I think Krishna Reddy has given us the answer perfect there. See, if you understand the question, you can come straight and say that, you can straight give us the answer. Dollar, like Krishna Reddy gave us an answer there. But if you are just trying to understand it, that okay, this is what I have understood. मुझे ये समझ आ रहा है शब्द, उसको हिंदी में मत convert करिए, because that's the easy way for all of you to go. So at least for this particular hour, try and be with me on the English front there. So Fatima, Krishna and Ajmol, correct answer there. Let's go to the next and try this out. What is the full form of UAE? United Arab Emirates or United American Emirates? Bhagwati Dave, welcome to the class. What is the full form of UAE? United Arab Emirates or United American Emirates? What is the full form of UAE? United Arab Emirates or United American Emirates? Anyone for the answer? Anyone knows the answer? Did you understand the question? Yeah, full form What of is the full form of UAE? United Arab Emirates or United American Emirates? Anyone for the answer? Rajesh, you're giving us the answer. Tell us. United Arab Emirates. Very good. Very good. This is for you. Thank you, Rajesh. Ekdam sahi. Very good. Rajesh and Ajmol have given us the right answer. This station was. Dispassionate. This was easy. Durga. Who's this Durga? I think that's the correct name that I could see. Dungar, Ayan, Kashyap. Dispassionate. Krishna, Games. Krishna, try करेंगे इसका pronunciation. Ma'am, it's not Ayan Kashyap, it's Ananya Kashyap. Dispassionate. Dispassionate. Okay. Dispassionate. Okay. Dispassionate. So dispassionate basically जो emotional नहीं होता ना उसको dispassionate बोलते हैं. The person who is emotionless is dispassionate. Passion
बहुत strong emotion होता है. Now putting that prefix there, DIS, actually is taking it to the reverse, opposite play ले सकते हैं उसका. So dispassionate, emotionless. Coming to you, Ananya Kashyap, I have a student with the name of Ayan Beta. So he has also given the correct answer, and Ananya Kashyap has also given us the correct answer. So apologies if I said something wrong with your name. Okay, let's go to the next and try this out. Rearrange the phrase to form a proper sentence. Swayed. On his feet. He. Slightly. I think few words were clear, but still we need to hear it out again. Bhagwati Dave, I missed you too. Swayed. On his feet. He. Slightly. Swayed. On his feet. He. Slightly. Anyone? मैम बिल्कुल समझ नहीं आ नहीं समझ आ रहा. Ananya, yes, Krishna, 2 words were correct. नो मैम Widely. Are he sweet? No. दोबारा सुनो. Swayed. On his feet. He swayed on his feet lightly. Slightly. He swayed on his feet lightly. देखो सुनो. Let the sentence come. Swayed. अच्छा आप लोगों को तो आया. On his feet. He. Slightly. He swayed lightly on his feet. H-E, he. अनन्या, मैं आपके लिए स्पेशली बोल रही हूँ बेटा ऐसे. H-E, he. Swayed. S-W-A-Y-E-D. मतलब अभी बताती हूँ. Swayed. Slightly. S-L-I-G-H-T-L-Y. Slightly. On his feet. Sway. जैसे आप पेड़ों को देखते हो ना ऐसे हिलते हुए, हवा से वो ऐसे हिलते हैं, उसको कहते हैं स्वे करना. ईडी पास्ट फॉर्म हो गया, तो वो अपने पाँव के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा हिल रहा था. When we dance a little bit there, he swayed on his feet lightly. Clear? आवाज अब दोबारा सुनो. If you have Swayed. On his feet. He. Slightly. Okay. Krishna Reddy, अब ठीक है, clearly समझ आ गया. Very good, Anita Lunawat, correct answer there. He swing on a street lightly. No Vidya, काफी close थी, but word थोड़ा सा दूसरा था उसके साथ में. चलिए, let's go to the next and try this out. Type what you hear. The statement might prejudice the jury. The statement might prejudice the jury. The statement might prejudice the jury. Did you pick up some words? The statement might prejudice the jury. Anybody? Whatever you hear, you just need to tell us. Ma'am, the statement might. The statement might prejudice the jury. Very good. The statement is fine there, Fatima. No, not Fatima. Ananya. The answer, 2 words were correct. Anyone else? Shagufta Khatun, thank you for joining us.
Plagiarism, ma'am. The Plagiarism. statement might prejudice the jury. The statement. हाँ बोलो बोलो. My plagiarism. No. No. The statement might. Might. Statement might prejudice to the jury. Prejudice. Correct. Correct. Let's see. The statement might prejudice the two nahi tha Fatima, the jury. The spelling is here THE, the statement STATEMENT, might MIGHT, prejudice PREJUDICE, the THE, the jury JURY. ध्यान से सुनो, मतलब मैं बताती हूँ, रुकिए. The statement might prejudice the jury. मतलब जो स्टेटमेंट है वो शायद जूरी पक्षपात करे. जो प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना, किसी की तरफ फेवर करना, और जूरी होती है 5 जनों की, पंचायत 5 जनों की. So 5 people in together when they make a judgment or they are trying to evaluate something, when they are trying to pass a judgment, it's a jury. तो जो स्टेटमेंट might prejudice पक्षपात कर सकता है जूरी, जो स्टेटमेंट है. The statement might prejudice the jury. चलिए next पे आ जाइए. Let's try the next. Let's go to the next and try this out. The straps that galled their shoulders. The straps that galled their shoulders. Anybody? Ma'am, the straps that gall to their shoulder. Okay, lot of words you could still pick up. फिर भी एक आधी बार और सुनो, है ना? एक आधी बार हम और सुनते हैं. The straps that galled their shoulders. देखो. The straps that galled their shoulders. The straps that galled their shoulders. Yes, Krishna? The straps that top their shoulders. No, the straps that galled, GALLED. The straps that galled their shoulders. THE, the straps, STRAPS, that, 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 galled, GALLED, their, THEIR, and then shoulders, SHOULDERS. Basically, when the girls especially, they wear 2 straps, they guard the shoulders. So आप जो straps पहनते हैं, 2 straps जो आप पहनते हैं, that is supposed to be worn, that can be worn basically. So यहाँ पे जो sentence कहना चाहते हैं, that can be understood, is basically it's a kind of a cloth wearing. एक कपड़ा है जो shoulders पे पहना जाता है और उसको उस जगह पर टिकाए रखने के लिए 2 straps होते हैं. So that is something here what they are trying to tell us, that the 2 straps are basically, you can have 2 straps there. Even you must have seen boys wearing a kind of 2 straps on the pants there. अलग से आता है, पीछे से cross होता है, and then they have the straps here. There is a shirt around this, there is a strap, and then you punch it here, if you must have seen it. So this is saying the straps that guard their shoulders. You can do that also. The straps that galled their shoulders. आपके इस shoulder को ऐसे तना हुआ रखने के लिए, सीधा रखने के लिए
दो स्ट्रेप्स पहने जाते हैं जो गार्ड करते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं अपने स्ट्रेप्स के साथ में। EFFERVESCENT Effervescent. ओके, एक बार आप लोग सुन लीजिए and then I'll just let you know. ये बहुत आजकल कॉमन, बहुत ही कॉमन काम में आने लगा है। Effer, just see the next pronunciation. Effer is easy, but उसके बाद का pronunciation थोड़ा ध्यान दीजिए। फातिमा, अनीता and कृष्णा, correct? Effervescent. Effervescent. SCENT, scent पता है। AFFER, effer पता है। Effervescent. Effervescent. EFFER, effer, VE, scent, SCENT. Effervescent. बट ज्यादातर आप क्या सुनेंगे, देखिए ये वाला शब्द है जो आप ज्यादा सुनते हैं। I have to refresh it, तो बार बार Effervescent. effervescent नहीं, मेरे से तो बोला ही नहीं जाएगा वो, but still I'll do it for you. Okay. So basically this word means anything which is shining very brightly. That is effervescent. Effervescent. Just hear the pronunciation again. Anything that shines brightly. क्या चीज बहुत ब्राइट, बहुत चीज हमें जो बहुत शाइनी ब्राइटली शाइन करती है, जिसे कहते हैं एकदम एक इंसान खुद ही अपने आप में इतना दमकता हुआ होता है. You must have seen some people that they are effervescent in themselves. Fatima, Anita, so many of you have given the correct answer. What is the capital of Hungary? So it's a simple Is question. it Paris or Budapest? What is the capital of Hungary? Is it Paris or Budapest? Any answers? Ma'am, Hungary. हाँ, Hungary की capital कौन सी है? What is the capital of Hungary? It's Is Budapest. it Paris or Budapest? It is Budapest. Budapest. हाँ, Hungary की capital क्या है? Is it Paris? Paris किसकी capital है? Italy की. It's Budapest basically. So Hungary की capital है Budapest. 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 What is the capital of Hungary? Is it Paris or Budapest? You have to arrange this phrase. 2-3 बार सुनो फिर शुरू करना. Yes, With Anita Lunaman, cockroaches. correct answer. Is infested. The house. With cockroaches. Is infested. The house. With cockroaches. Is infested. The house. Anyone? Which cockroaches? Ma'am, with cockroaches, house is infested. Oh, The house infested with the cockroaches. so With cockroaches. Is infested. The house. I think most of you nahi, matlab, I think that's Fatima who has given us the correct answer. पूरे घर के अंदर चारों तरफ कौन फैला हुआ है? कॉकरोच. So यहाँ जो word है ना infested is basically infested basic meaning है, और infested past participle भी है और past tense भी है. दोनों तरह से हम इसको ले सकते हैं. That means verb का दूसरा form और तीसरा form. So it is spread through. Infested मतलब चारों तरफ फैला हुआ है. So the sentence here means and tells us the house is infested with cockroaches. With cockroaches. Is infested. The house. So the house is infested with cockroaches. Fatima, your answer was absolutely correct. I just want to tell you the spelling of infested. INFEST.
Infest is the basic root word. When you put ed there, it's the past participle and past tense also. That means the base word, verb 1 is infest, 2 infested, past form, past participle infested again, so third form also is infested. Incognito. ये तो बहुत कॉमन है भाई, ये तो आपको आना चाहिए. कृष्णा रेड्डी, ग्रेट. You know this word or तुक्का मारा था? Oh, ma'am, just we are. मैम ने सुनाई नहीं देता, आंसर गलत हो जाता है. अच्छा, okay. Sorry. Incognito. Krishna, I'll talk to you. Let her hear it out. And others also पहले सुन लो. फिर हम कृष्णा से बात करें. Incognito. Last time. Please hear the spelling, the pronunciation. Incognito. Incognito. Yes. Krishna क्या कह रहे थे? Incognito. Yes, absolutely. So कहीं काम में लिया हुआ है या कहीं सुना था इसके पहले कोई क्लास में सुना है? Ma'am? Have you heard it somewhere else? No, ma'am. No. Incognito is basically when you are not identified. Something which gets camouflaged. That means you must have seen few animals who take the color of the nature there. They camouflage themselves. So anybody who is not identified, we put them in incognito. Incognito. Cognitive and incognitive एक terms भी होती हैं, but here we are using incognito. एक बार और pronunciation सुन लीजिए please. Incognito. Okay, आइए next पे आ जाइए. Rearrange the phrase you hear to form a sentence. Was alleged. Falsified test results. To have. The laboratory. Was alleged. Was alleged. Falsified test results. Justified test result. To have. To have. The laboratory. The laboratory. Was alleged. Falsified test results. To have. The laboratory. Was alleged. Falsified test results. To have. The laboratory. There is a specific word which is actually creating a little issue for all of you. It's a new word. दोबारा से सुन लीजिए. पकड़ में आ सकता है क्योंकि word Was alleged. मैम नहीं समझ आ रहा. Falsified test results. To have. The laboratory. मैम समझ नहीं आ रहा. हाँ, अभी बताते हैं बेटा, रुको. So the answer actually is, if you can write it somewhere, then आप अच्छे से समझ पाएंगे. The laboratory was alleged to have falsified test results. इसका जवाब ये है. The laboratory was alleged to have falsified test alleged. results. Falsified test results. To have. The laboratory. तो मतलब वो जो लेबोरेटरी है उसको हेरा फेरी करे हुए जो टेस्ट रिजल्ट्स थे वो देने की परमिशन थी. So the laboratory was alleged, 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 to have falsified, falsified, test results. So we have the alleged, all, just a second.
when we are here talking about alleged word, it means that you are permitted to have falsified, हेरा फेर करी हुई टेस्ट रिजल्ट्स को आप दे सकते थे. This is the last slide that I have. जो भी सुनाई देता है वो आपको लिखना है. Dotted lines indicate the text's margins. Yes, Anita, the answer was he is correct. आपने second time join किया है Anita ये class? Dotted lines indicate the text's margins. Dotted lines indicate the text's margins. Anything that you could hear? किसी को कुछ सुनाई दे रहा है? Dotted lines indicate the text's margins. Indicate the text margin. हाँ तो बहुत साफ बोल रहे हो ना बेटा. काफी कुछ तो समझ आ रहा है. किसी और को कुछ समझ आ रहा है? Anyone? Dotted lines indicate the text's margins. कौन सी line indicate the margins? काफी क्लियर बता दिया अब तो मैंने. Dotted lines indicate the text's margins. Dotted lines indicate the text's margins. Dotted lines indicate the margins. The dotted lines, चलो मैं वही लिख देती हूँ. The dotted lines indicate. Yeah, indicate the text margin. Okay. No. Dotted lines indicate the text margin. आपने यही बोला था ना? Yes, ma'am. Absolutely correct answer. हाँ, आप बताओ. Dotted lines indicate the text's margins. फातिमा एक सेकंड. अनन्या कश्यप आपने क्या बोला था बेटा? Ma'am, dotted line indicate the text margin. हाँ, सब कुछ ठीक था. बस पहला जो वर्ड था बेटा वो डॉटेड है. When you put dots there, मार्जिन लाइन होती है ना अनन्या, नोटबुक के अंदर एक मार्जिन लाइन होती है ना, वो जो डॉटेड लाइंस हैं वो इंडिकेट करती हैं मार्जिन को. बस यही कहना चाह रहे हैं. That's all what we had today. Let me see the leaderboard, what the leaderboard has to say. Oh, क्या बात है. Krishna Reddy 34 coins. Wow. Fatima on 30 coins. Very good. Anita on 22 coins. Shabash. Ajmol on 22 coins and Ananya Kashyap. आप भी हो आज तो leaderboard पे with 12 coins there. Shabash. Anita Lunawat, I can see all the answers there. I don't know. Have you joined from somewhere else? That means any other teacher you have joined before? Because these sections get repeated. तो हो सकता है आपने किसी और के साथ join कर रखा होगा. But I'm so proud of Krishna Reddy. See, I told you, na. I have that faith. I know things will change. But this is something which I just want to tell you that I'm coming back tomorrow, same time, same place. Don't forget to log in. Same time, 1 o'clock. This is Nina who would like to sign off. Please continue to hear. यहाँ जितनी ये practice पक्की करेंगे ना, तो binge watching करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा. जहाँ पे अंग्रेजी बहुत अच्छी movies हैं, उसको भी समझने लग जाएंगे आप. Thank you so much. This is Reena signing off from Hello English. Take care of yourself and do join me tomorrow. Bye bye.